Hello students, welcome back to my YouTube channel. We will continue with exercise 22B. The next question is question number 2. In the following figure find. So here also you have been provided with some right angle triangle. Right angle triangle with angle of reference x. 1, 2 hypotenuse is given 2 and the perpendicular is given y. Side opposite to reference angle is always perpendicular. We will find the third one. Third one, we need to find the value of sec x minus tan x into sec x plus tan x. So here we are getting sec x is what? It is actually hypotenuse upon base, and tan x is tan x will be perpendicular upon base. Students, you don't have to write down this step. This is just to explain you. So sec x is hypotenuse upon base plus tan x. Tan x is always perpendicular upon base. The side opposite to the reference angle is always perpendicular, and the side adjacent to the reference angle is always base. It is hypotenuse is what? 2, base is 1 minus here perpendicular is y, so y upon base is 1. After that hypotenuse is 2, base is 1 plus perpendicular is y, and again base is 1. So here after solving you are getting 2 minus y into 2 plus y. So here the identity a minus b into a plus b, so a square minus b square is the answer. 4 minus y square is your answer. In question 3 also you have been provided with some figure right angle triangle. Angle x is a reference angle. Again one triangle is there. Here y is also one reference angle. Here this angle is 90 degree. This side is given as 6. This is 8, and this side, that means hypotenuse. As per the big triangle, hypotenuse, the side opposite to 90 degree is hypotenuse. So you can say that here for as per big triangle, hypotenuse is 17. So we need to find the value of 3 tan x minus 2 sin y plus 4 times cos y. First we will find out the hypotenuse for small triangle. So if we consider this triangle, the yellow one, in this triangle, see perpendicular and base is given, so you can easily find out the hypotenuse. So the hypotenuse will be the whole square. It is 8 square plus 6 square, so you are getting 64 plus 36, that means 100. So hypotenuse you are getting as hypotenuse is equal to 10. So here 10 is your hypotenuse. Okay, consider this side. 6 is given, so for this side we will consider it as p. So for big triangle we will apply the Pythagoras theorem, because here we should know all the sides of the triangle. So if we consider the reference angle as x, so that means for tan x we should know the perpendicular upon base. So we know the 8, but one side we know 8, but the other side, that is p plus 6, we need to find the p value. Then only we will able to find the value of tan x. So first we will find out the p value. So by applying Pythagoras theorem to the big triangle, so we are getting hypotenuse is 17 square is equal to 8 square plus p plus 6 the whole square. Students, consider this. The base is p plus 6. So therefore solving 17 square is 289. Transpose this 8 to the left hand side, so we are getting minus 64 is equal, so p plus 6 the whole square. So now square root on both the side, what you are getting, 225 is the square root of 15 and is a square of 15.
So taking square root on both the side, we are getting p plus 6. 15 is equal to p plus 6, that means p is equal to you are getting 9. मतलब ये जो बेस है, बेस आपको मिल रहा है, बेस कितना है, p प्लस 6 है, मतलब बेस आपको मिल रहा है 9 प्लस 6 15. तो बेस इज 15 नाउ. 3 tan x, that means 3 times tan x will be what, perpendicular upon base. So we know that perpendicular is 8 and the base is 15, minus 2 times sin y. Sin y means 8 upon hypotenuse, so it will be perpendicular upon hypotenuse, that means 8 upon 10 plus 4 times cos y. Cos y means adjacent upon hypotenuse, so that means 6 upon 10. So what we are getting, by solving we are getting 3 5s are 15, 2 5s are 10, and here 8 by 5 minus 8 by 5 coming 0, so you are getting 4 6 4s are 24 by 10. So the answer is 12 upon 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. इसमें भी आपको जो है राइट एंगल ट्रायंगल दिया है. दिस इज़ योर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको एंगल ए बी जो है 90 डिग्री दिया है, सी है, और ये आपको जो बी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी दिया है. एंगल निकालना है कॉस ऑफ एंगल डी बी सी. वी नीड टू फाइंड कॉस एंगल डी बी सी. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान दो. यहाँ पर ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है और बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है. ठीक है, यहाँ पे भी हम पहले बड़े ट्रायंगल के हिसाब से ट्रायंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और ए सी फाइंड आउट करते हैं. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी सी स्क्वायर. तो बी सी स्क्वायर मीन्स 25 plus AB square means 144. So we are getting 169. So that is what AC is equal to 13 you are getting. So AC is equal to 13. तो AC हमें मिला है 13. हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया है. कंसिडर दिस ट्रायंगल. विच वन? ट्रायंगल BCD. ट्रायंगल BCD में अगर आपको एंगल D, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया है. कौन सा? इफ़ एंगल CDB इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो एंगल है एंगल C प्लस एंगल CBD विल बी equal to 90 degree. Triangle sum property, that means the other two angles, that is what, angle C plus angle CBD is equal to 90 degree. ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो. इन ट्राइंगल ए बी सी ऑल्सो इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री मेंशन है, तो यू कैन राइट दैट एंगल सी प्लस एंगल ए is also equal to 90 degree by angle sum property. So therefore from 1 and 2 you can say that both the things, angle C plus angle CBD इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A हो गया है. अब इसमें एंगल C और एंगल C कैंसल्ड हो गया, तो दैट मीन्स हमें क्या मिलता है कि एंगल CBD जो है, एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल A हो गया है. तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है. कौन से? एंगल CBD ये एंगल, दिस इज दिस एंगल एंड एंगल A, दिस एंगल आर इक्वल, येलो वन. ठीक है, तो अभी जो है कॉस एंगल CBD, इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, कॉस एंगल DBC. तो कॉस ऑफ एंगल DBC ऑफ एंगल CBD इक्वल है, दैट मीन्स कॉस ऑफ एंगल A हो जाता है. तो कॉस ऑफ एंगल A कितना है, यहाँ पर हमें बड़े ट्रायंगल में पता है, तीनों साइड पता है, तो कॉस ऑफ एंगल A विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 12/13. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉट एंगल DBA. मतलब दिस एंगल वी नीड टू फाइंड आउट.
consider triangle BDA. In triangle BDA also, if angle D is equal to 90 degree mention, that means angle DBA and angle A will be equal to 90 degree. Therefore you can write down angle DBA plus angle A is equal to 90 degree. This is equation number 3, and here you can say by triangle sum property. Next is what? As per the big triangle, in big triangle ABC, angle B is 90 degree. Therefore you can write angle C plus angle A is also equal to 90 degree. Angle C plus angle A is also equal to 90 degree. This is equation number 4. So from 3 and 4, what you can do? From 3 and 4 you can say both the things are equal to 90 degree. Therefore angle DBA plus angle A is equal to angle C plus angle A. अब angle A get cancelled out. Therefore angle DBA is equal to angle C. दैट मीन्स अगर मुझे कॉट एंगल DBA निकालना है तो वो होता है कॉट एंगल C, और कॉट एंगल C क्या होगा बच्चों? वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट एंगल C इज़ अ रेफरेंस एंगल, तो कॉट C विल बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 5/12 इज़ योर आंसर.